Hello friend, how are you? Welcome to Tirpan Study Center. We are going to do today is very important MCQ question here. The MCQ question for class 6 science chapter here air around us and with the answer. And this is important and which will be very important for the exam point of view and it will be important for the competitive exam also. Let's see what is our topic today. Today we discussion most important chapter here air around us. Class 6th CBSE NCERT science here. That's important. And today we discussion most important MCQ here. The MCQ is most important for the exam point of view. And let's see question here. The question is most important for the exam point of view. Question here. Oxygen is a supporter of. You know that this question is very interesting. Oxygen is a supporter of. ऑक्सीजन किस चीज़ का समर्थन करता है, यानी ऑक्सीजन के कारण कौन चीज़ संभव हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन से ऑक्सीजन के कारण क्या होना आसान हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ए कंबूशन, बी नाइट्रोजन, सी स्मोक, डी डस्ट। यू नो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। The question here, oxygen is a supporter of. Oxygen is a supporter of. The answer here, combustion. It means to the A option is correct for this question. Combustion, there is a support for the oxygen. Without oxygen, do not take a fire. It means to the oxygen is the most important of the fire. The A combustion is most important. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, a wind does not be help in the moment of. The wind does not be help in the moment of. देखा जाए तो डैश की गति में वायु सहायता नहीं करती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से हवा जो है किसकी सहायता नहीं करती है। हवा जो है इन चारों ऑप्शन में से किसकी सहायता नहीं करती है, जिसको हवा की ज़रूरत नहीं होती है। क्वेश्चन समझ में आया कि इन 4 ऑप्शन में से हवा को किस में ज़रूरत नहीं पड़ती है। द क्वेश्चन हियर, विंड डज नॉट बी हेल्प इन द मोमेंट ऑफ फ्रीक की, बी वेदर क्लॉक, सी सीलिंग फैन, डी सेलिंग यास्ट। You know that is a question is very interesting. Question is very interesting. But answer here, the answer is a ceiling fan. Option is a C is correct. Ceiling fan. The wind does not be help in the moment of, because ceiling fan, the moment of magnetic field, there is a electrical, there is a apply and there is a produce a magnetic field. There is ceiling fan is a blow. There is a not a here help to the wind here. It means to the C option is correct. The wind does not be help of ceiling fan. That's important. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, envelope of air that surrounds the earth is known as. The envelope of air that around the earth is known as, mean पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाले वायु का आवरण क्या कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो है चारों तरफ से जो है हवा ने घेर रखा है और उसे वायुमंडल बनता है।
तो वायुमंडल को हम क्या कहते हैं? क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता तो शायद हमारे धरती पे जीवन का संभव नहीं होता। तो क्वेश्चन यही है, इन्वॉल्व ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ इज नोन एज ए बायोस्फीयर, बी एटमॉस्फेयर, सी इकोसिस्टम, डी इन्वायरमेंट। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, but you know that answer is here atmosphere. Atmosphere is most important because atmosphere air there is around the earth is known as the atmosphere. Atmosphere is the most important. There is a part of air. It means the B option is correct. B atmosphere is correct for this question. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. In our atmosphere, which component of the air are present in the largest amount? You know that this question is very interesting. In our atmosphere, which component of the air are present in the largest amount? Mean हमारे वायुमंडल में वायु कौन से घटक सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? आपको पता है हमारे ऊपर जो है एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस मौजूद है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है और समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। देखा जाए तो इन आवर एटमॉस्फेयर विच कंपोनेंट ऑफ द एयर आर प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट? ए नाइट्रोजन, बी वाटर वेपर, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। You know that is a question is very interesting. The one factor important here, the atmosphere is a composed of so many different gases. The atmosphere is composed of so many different gases, but the gas present in the largest amount is a nitrogen, which is a 78%. And other gas found in the atmosphere include oxygen is a 21%. And carbon dioxide is a 1%. It means to here nitrogen is a 78%. The nitrogen is a large amount present in the atmosphere. Option A is correct. Option A is correct. Nitrogen. That's important here. The next question on your screen. Question here. The composition of nitrogen gas in the atmosphere is. You know that question is very interesting. कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे वायुमंडल में 78% जो है नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 1% है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन भी इसी तरह से दोबारा बना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की संरचना कितनी प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है? द क्वेश्चन हियर द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ए 21%, बी 78%, सी इज 1% एंड डी इज 0.01%. You know that 21% there is a oxygen gas present in the atmosphere and 1% the carbon dioxide and other is a sulfate is a 0.01%. It means to the option B is correct. There is a nitrogen gas is atmosphere is a present of 78%. 78% is the correct answer of this question. 78%. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. The two gas which are together make up about the 99% of the air are. The two gases which together make about a 99% of the air are. Mean ये दो गैस मिलकर लगभग 99% वायु बनाती है। हमने भी प्रतिशत भी देखा, तो कौन दो प्रतिशतों को आपस में अगर हम मिला देते हैं तो 99% बन जाती है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और समझदारी वाली बात है कि हम कौन दो गैसों को आपस में मिला दे कि 99% गैस बन जाएगी।
The option here, A nitrogen and carbon dioxide, B nitrogen and ozone, C nitrogen and oxygen, D carbon dioxide and oxygen. Question is very interesting. But you know that nitrogen is a percent 78% and carbon dioxide percent is only 1%. It means to the here nitrogen is 78%, not 90%, 78% here, on carbon dioxide 1%. It means to 79% is the total. But nitrogen is a 78 and ozone here 0.01%. It means to the 78.01% is not a 99% is make here. And C option nitrogen is a 78 and oxygen is 21. 78 and 21, there is total is a 99%. It means to the option is a C is correct. Option C is correct. Nitrogen and oxygen make about a 99% of air in our environment, and that's the most important. Nitrogen and oxygen is together is contribute here 99% of air gases. That's important. Let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Air is a considered to be. You know that air is a considered to be mean वायु के माना गया है. वायु को क्या माना गया है? वायु को हम क्या मानते हैं? ऑप्शन है अ कंपाउंड, बी अ मिक्सचर, सी ऑन एलिमेंट, डी अ सॉल्वेंट. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. A compound, no way, this is not a correct answer here. The air is considered to be a mixture. Air is considered to mixture. There is a present of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, ozone, and so many gases here. It means to the option B is correct. Air is considered to be a mixture of many types of gas. A mixture. B is a mixture here. It means the answer is a B, a mixture. That's a great answer. B, a mixture here. And let's see next question here. You know that next question on your screen. Question here. Which component of air are harmful to living organism? Question here. Which component of air are harmful to the living organism? Mean कौन सा पदार्थ है जो हवा में सभी जीव जंतु के लिए काफ़ी खतरनाक है? देखा जाए तो हमारे हवा में ऐसा कौन सा गैस है, कौन से जो है एयर है जिसके कारण जीव जंतु को जो है बहुत नुकसान पहुंच सकता है? तो ऑप्शन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी डस्ट एंड स्मोक, सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, and the smoke and water vapor. You know that question is very interesting. Which components of air are harmful to the living organism? Nitrogen and oxygen, most important component in the air. It's not a harmful. And smoke and water vapor. Smoke is harmful, but water vapor is the most important phenomenon here. It means to the D option is not a correct. See oxygen and carbon dioxide. Oxygen is the most important. There is a life-giving air here, oxygen, and carbon dioxide is the most important for the plant because plant is a make our food to present of carbon dioxide. It means to the oxygen is a take place of human beings and carbon dioxide is a take place of plant. It means two is most important component. But examiner asks the question here, harmful to living organism. It means to the option B is correct. Dust and smoke. Dust and smoke, there is a harmful air, there is all living organism because dust is the bad component here and smoke is also is a bad component. It means to B option is correct for this question.
B, dust and smoke. B is correct. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Weather clock show the direction of moving dash of place. Question is very interesting. Weather clock, you know that weather clock show the direction of moving dash of place. देखा जाए जो मौसम घड़ी होती है, जो मौसम की घड़ी होती है किसी स्थान के डैश चलने की दिशा दर्शाती है. किसको चलने की दिशा जो है दर्शाती है. आपने देखा होगा कई जगह पर जो है एक एरो सी बनी होती है और ऊपर जो है एक हैंड बैठा दिया जाता है. और किसको जो है ये रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. वेदर क्लॉक जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन है ए एयर, बी वाटर, सी स्मोक, डी डस्ट. क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग. वेदर क्लॉक शो द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ अ प्लेस. You know that the answer is clear. Air, that's important. The air is the most important. The weather clock shows the direction of the moving air or place. A option is correct here. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. What are the property of air? What are the properties of air? यानी देखा जाए तो वायु के क्या गुण होते हैं. वायु मतलब हवा. हवा के क्या गुण होते हैं. हवा को आप कैसे जानते हो, हवा का क्या गुण हो सकता है. क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है. ऑप्शन देखें तो ए इट ऑक्यूपाई द स्पेस. ए इट ऑक्यूपाई द स्पेस. बी इट इज़ अ प्रेजेंट ऑफ एवरीवेयर अराउंड अस. सी इट हैज़ अ नो कलर and it is a transparent. And dear all of these, question is very interesting. What are the property of air? What are the property of air? You know that it occupy the space. The air occupy the space. A is the correct answer here. It is occupy the space. B, it is a present everywhere is around us. You know that air is present everywhere is around us. It means the B option is also correct here. C, it has a no color and it is a transparent. Yes, it is correct because air is a no color and it is a transparent. The C option is also is correct here. It means A, B, C is correct. The option here D is correct here. All of these A, B, C is a correct. It means the D option is correct. All of the above here is correct. All of the above. D is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. The wind does not be help in the moment of which of the flowing. Question is very interesting. Wind does not be help in the moment of which of the flowing. It means पवन निम्नलिखित में से किसकी गति में सहायता नहीं करता है. यानी हवा के द्वारा इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं चलती है. इसमें हवा का कोई रोल नहीं होता है. देखिए हवा जो होती है किसी वस्तु को देखिए उड़ा के लेके चली जाती है. तो हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है, ये चार आपके समक्ष जो है ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हवा के सहायता से नहीं चलती है. यानी पवन में ये किसी गति में सहायता नहीं करता. पवन जो हवा जो है इस पर सहायता नहीं करती है. दो ऑप्शन है वेदर क्लॉक, बी सेलिंग यास्ट, सी सीलिंग फैन, डी फ्रीकी. You know that question is very interesting. Wind does not be help in the moment of which of the flowing. Weather clock, a moment is the wind here. It means the A option is correct. But examiner asks the question here, not help. Weather clocks help the wind here. The signing yes, they also help the wind. It means the A, B is not a
correct answer. Okay. C, ceiling fan. Ceiling fan, this is important answer here because fan does not be moment of wind. There is a moment of magnetic field. You switch on and there is a make a magnetic field. The ceiling fan start. It means to here a ceiling fan. That's important answer. C is the correct answer. The ceiling fan wind does not be help in the moment which of the following is here ceiling fan. C is a correct answer. Next question on your screen. Question here. What is not true about the air? You know that for statement given here, the examiner asks a question. What is not true about the air? यानी देखा जाए तो वायु के बारे में क्या सत्य नहीं है। चार ऑप्शन में से हवा के लिए कौन सी बातें जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी बातें जो है सही नहीं है। द ऑप्शन है इट हेल्प इन द मोमेंट ऑफ एरोप्लेन, बी बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, सी इट मेक द विंड मिल रोटेट, and it has no role in the water cycle. You know that question is very interesting, but one fact is important. Air play the biggest role in the water cycle as the water vapor and rise to form of cloud. Air play a biggest role in the water cycle as the water vapor the rise to form a cloud. It means to the answers here. Answer here. It has no role in the water cycle. It's a wrong option. It is a wrong option. An examiner also is called to the wrong option, not a true. It means to the D option is correct here. The A help in the movement of aeroplane. That is a correct answer. B is the birds can fly due to the presence of air. That's the true. And it make to the windmill is a rotate is also true. But last statement is given. It has no role in the water cycle, but air play the biggest role. Air play the biggest role in the water cycle as the water vapor rise to be form a cloud. It means D statement is wrong here. D statement is not true. That means the D option is correct for this question. Next question on your screen. Question here. Why do the mountaineer need to carry oxygen cylinder with them? Or because question is very clear. Why do the mountaineer need to carry oxygen cylinder with them? Because mean here पर्वत आरोही को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की आवश्यकता क्यों होती है? क्वेश्चन समझ में आपको आया? जो पर्वत आरोही होते हैं, जो माउंटेन पे जाते हैं, देखा ही होगा कि बहुत से व्यक्ति जो है माउंट एवरेस्ट की फतह कर रखे हैं, लेकिन वो साधारण रूप से नहीं जाते हैं। वो जब जाते हैं माउंटेन पे तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। लेजेंडरी पॉल भी जो गई थी 2-2 बार, वो भी जो है सिलेंडर लेके गई थी और उनके साथ घटना घटा था कि उनको जो है अपनी सिलेंडर को जो है शेयर करना पड़ा था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हमारा यही है कि जो पर्वत आरोही होते जो पर्वत पर जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? तो ऑप्शन है देयर इज नो ऑक्सीजन इन द हाई माउंटेन, बी देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द माउंटेन एट अ हाई एल्टीट्यूड, एंड सी ऑक्सीजन कीप देम वार्म एट अ लो टेम्परेचर, एंड डी ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बी फॉर अ कुकिंग. You know that question is very interesting, but one fact you understand that's important. The mountaineer carry oxygen cylinder with them because there is a deficiency of oxygen in the mountain at the high altitude. As we go higher in altitude, their atmosphere get thinner and the oxygen supply decrease. Therefore, will the climbing mountain, it's make a breathing difficult. Hence, mountain carry oxygen cylinder with them. There is a very difficulty breathing for the
mountains here. Mountain, that is important. It means to the answers here. The answers here that's important. There is a lot of deficiency of oxygen in the mountain at the high altitude. Option is B is correct. There is a lot of deficiency of oxygen in the mountain at the high altitude. That's important answer here. And let's see next question. The next question on your screen. Question here. A moving air is called. Moving एयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन साफ है कि चलती हुई वायु को हम क्या कहते हैं। हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं। साधारण लैंग्वेज में अगर देखा जाए जो हवा चलती है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। मूविंग एयर इज कॉल्ड ए डस्ट, बी ए स्मोक, सी विंड, डी नाइट्रोजन। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड द आंसर हियर C wind. The moving air is called wind. Option C is correct. And let's see next question here. The next question on your screen. Question here. Properties of oxygen gas is. Properties of oxygen gas is. ऑक्सीजन गैस के क्या गुण होते हैं। ऑक्सीजन गैस का क्या गुण होते हैं ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन जो गैस होती है उसके क्या गुण होते हैं। जो हमारे ऑप्शन है इनमें से कौन सा गुण जो है ऑक्सीजन में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, ऑक्सीजन इज अ टेस्टलेस, ऑक्सीजन इज अ ऑर्डरलेस या डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज, you know that oxygen gas is a colorless. That's a true here. Oxygen gas is a tasteless. It means to B is also true here. And oxygen gas is odorless. It means to the A, B, C is correct. The answer here D, all of these. The question property of oxygen gas is colorless, tasteless, odorless. It means to all of these. D option is correct for this question. D, all of these. Let's see next question here. Next question on your screen. Question here. A smoke is produced mainly by burning. A smoke is produced mainly by burning. यानी देखा जाए तो धुआं जो होता है, धुआं मुख्यतः जलने से उत्पन्न होती है। धुआं जो है किसके जलने से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन हमारा समझ में आया कि इन ऑप्शन में से किसके जलने से धुआं उत्पन्न होती है। द ऑप्शन है वुड, बी कोल, सी केरोसिन एंड डी ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्मोक इज प्रोड्यूस मेनली बाय बर्निंग ऑफ wood, coal, kerosene. You know that a wooden is here burning. There is a lot of smoke is produced, and the coal is burned. Lot of the smoke is produced here, and kerosene also. It means to wood, coal, kerosene produce a lot of smoke. It means to the option D is correct. All of these. Smoke is produced mainly by burning of wood, coal, kerosene. It means to D option is correct. All of these. And let's see next question here. Next question on your screen. Question here. One of the component of air used to manufacture a fertilizer on the large scale is dash. You know that question is very interesting. One of the component of air used to manufacture a fertilizer on the large scale is mean कि हवा जो है इनमें से एक ऐसी चीज़ को बनाती है जो एक तरह का फर्टिलाइज़र कहलाता है। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है दोस्तों जो हम खेतों में डालते हैं और खेतों में डालने से जो है उपज बढ़ती है। इन चारों ऑप्शन में से हम किस चीज़ को डालते हैं जो एयर का मैन्युफैक्चर होता है यानी एयर से बना हुआ होता है और उसके कारण जो है अच्छी कृषि होती है।
क्वेश्चन बहुत समझ वाली है कि इन चारों ऑप्शन में से हम किसका उपयोग जो है खेतों में जो है कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए करते हैं, और ये जो है हवा का ही पार्ट है। द ऑप्शन ए कंबूशन, बी नाइट्रोजन, सी स्मोक, डी डस्ट। नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। One of the component of air used to manufacture of fertilizer on a large scale is, you know that B is a combustion, that is not a fertilizer here. Nitrogen, nitrogen is type, there is a fertilizer. You know that nitrogen is most important for agriculture. There is a nitrogen. One of the component of air used to manufacture fertilizer on the large scale is a nitrogen. Nitrogen, it means to B option is correct here. Nitrogen, B option is correct. And let's see next question here. अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एयर इज प्रेजेंट इन, एयर इज प्रेजेंट इन, वायु कहाँ पर विद्यमान है, हवा जो है कहाँ पर हमें प्राप्त होती है, हवा से हम कहाँ पर मिल सकती हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ भी समझ लीजिए। एयर इज प्रेजेंट, हवा कहाँ पर उपस्थित होता है। ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, बी सोयल, सी वाटर, डी एवरीवेयर। यू नो दैट इज क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट many students take options A is a atmosphere is the right answer, but no, air is present in everywhere, air present in everywhere, atmosphere, soil, water, everywhere. It means the D option is correct. The air is present is everywhere. D option is correct for this question. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, which of the following gas is used for the breathing? Question is very interesting and very easy. कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इन चार ऑप्शन में से आप किसका उपयोग जो है सांस लेने में करते हो। द ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग गैस is used for a breathing? You know that answer is clear, oxygen. Oxygen is a take the breathing. It means the C option is correct, oxygen. And let's see next question here. The next question on your screen, question here, Anya took a lamp of dry soil in a glass beaker and added to water to it until the soil was completely immersed and she absorbed bubble coming out of the soil. The bubble is contained here. You know that the question is very interesting. Anya took a lamp of dry soil in a glass beaker and added to the water to it until the soil and was completely immersed. She absorbed bubble coming out of the soil. The bubble is contained. Mean अन्या ने एक कांच के बीकर में सूखी मिट्टी का एक ढेला लिया और उसमें तब तक पानी का डाला जब तक कि मिट्टी पूरी तरह से डूब न गया। उस मिट्टी में बुलबुले निकलते हुए दिखाई देने लगते हैं। आखिर बुलबुले क्यों निकलते दिखाई देते हैं? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो कि आप एक गिलास लो, ठीक है, कौन सा गिलास, शीशे का गिलास, और उसमें मिट्टी के एक ढेला जो होता है, मिट्टी का जो होता है टुकड़ा, वो उसमें डाल दो और देखो कि उसमें से क्या होता है। कुछ आपको निकलता हुआ नज़र आता है तो आप देखोगे कि उसमें से बुलबुले निकलते हुए नज़र आएंगे। तो आखिर ये बुलबुले जो होते हैं किस कारण निकलती हैं? तो ऑप्शन सी है, और वो बुलबुला जो होता है किस तरह का होता है, उस बुलबुले में कौन सी गैस होती है। तो ऑप्शन ए ओनली ऑक्सीजन गैस, बी वाटर वेपर, सी एयर, डी नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। And he took a lamp of dry soil in the glass beaker and added to the water to it until their soil was
completely immerse. See, absorb bubble coming out of the soil, and the bubbles contain here. The answer is clear here. The soil is contained of air. It means the bubble is here. Come in. That's the most important. In fact, here, when the water is poured into a dry soil, the soil absorbs the water, and the air pocket present in the soil escape the form of bubble. That's important here, and that's the most important for exam point of view. This topic was till this. We will be do their next topic in the next part. If you like it, then please like, share, subscribe, and share the video as a much as a possible. Do not think subscribe and save in your mobile. Thank you.